All right, ladies and gentlemen, we are having managers here in front of the camera. Now they were actually not here. However, I just requested them to come in front of the camera and say something regarding BPO industry. What do you feel, Okay. and what is the most significant role that you play here, and you're so much happy with it? Well, let me tell you, BPO industry, what I think is the best opportunity for the youth, actually, who wants to improve their English, their listening, and their speaking skills. Great. Yeah, and I have a great experience in the call center industry, wide experience of like 5 years. Uh-huh. I'm currently working as a senior manager, and I think that I really wanted to grow more. And I wish and I pray for everyone who is working in a call center industry that everybody should get the opportunity to polish their skills of English, And like to learn and listen. And I have a question for you. How do you feel being going against nature? Mean to say, Working in the night time, right? working in night shifts. Yes. Let me, yeah, it's like working against the nature. It's really difficult to wake up whole night and sleeping in the daytime. It disturbs your whole daily routine. And how's the response in terms of money, in terms of support? Well, in terms of money, it's really good. In terms of support, your family should be supportive when you're working in the night time and you are sleeping in the daytime. Your family should be supportive in that sense. Okay, because you are unable to attend the family functions, the weddings, the birthdays, parties, and all that. You have to skip that because when you're working in a night shift, especially in a call center industry, it has really, really no heart for you. Okay, no hard feelings for you. Response They is tremendous. You need to. Yeah, exactly. You got it right. Thank you. It's really lovely. Thank so you. very much for Thank you. having your precious words. Okay. And we are really blessed to have your comments. It's really my pleasure. Okay, thank you. All right, ladies and gentlemen, today I actually have one of my best friends who will be explaining about the technology that we use in nowadays. He is so much intellectual, and I can say he is a great thinker. Let me just have him on the screen. Mr. Zebran, would you please go ahead and explain? जबरन साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि क्या रीज़न हो सकता है जो कि आजकल लोग पूरी वीडियो देखते ही नहीं है, बस फॉरवर्ड ही करते हैं आगे? क्या मतलब इसके ऊपर कोई रोशनाई डाले? देखिए सर, थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। इसमें देखें वेरियस रीजंस हो सकते हैं। जो एक मेन रीज़न ये है कि जो एक ऑनलाइन ऑडियंस है उसकी साइकी कंपैरेटिवली डिफरेंट होती है एक न्यूज़पेपर रीडर के या जो आप ब्रॉडकास्ट व्यूअर के। जो ऑनलाइन व्यूअर होता है या ऑनलाइन ऑडियंस होती है उसकी साइकी इंटायरली डिफरेंट होती है। उनका कंसंट्रेशन लेवल इतना ज़्यादा नहीं होता, वो इतना ज़्यादा देर कंसंट्रेट नहीं कर सकते, वो फोकस नहीं कर सकते किसी भी चीज़ पर, किसी भी टॉपिक पर। अगर वो कोई वीडियो देख रहे हैं, वो इस पर इतना ज़्यादा फोकस या कंसंट्रेट नहीं कर सकते। या कोई चीज़ रीड भी कर रहे होते हैं तो वो अगर टेक्नोलॉजी के थ्रू रीडिंग कर रहे हैं तो वो अपने फ़ोन पर या आईपैड पर या कोई कंप्यूटर पर या किसी भी चीज़ पर अगर वो रीड कर रहे हैं तो वो ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर सकते। इसकी एक मेन वजह ये भी है कि टेक्नोलॉजी पर उस तरह फोकस नहीं किया जाता जिस तरह के आप एक फिजिकल किसी रीडिंग बुक पर या प्रिंट फॉर्म में अगर कोई चीज़ होती है तो टेक्नोलॉजी के जिस तरह पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है इस तरह इनका नेगेटिव इफेक्ट भी होता है। और ऑनलाइन ऑडियंस की साइकी इंटायरली डिफरेंट होती है बाकी कंपैरेटिवली दूसरी ऑडियंस के। अच्छा, और इसी वजह से सर ये देखिए आपके वो आजकल शॉर्ट्स का ट्रेंड आ गया है। कभी एक टाइम होता था कि हम पूरी मूवीज़ देख लेते थे, ठीक है, 2-3 घंटे की मूवीज़ देखते थे। और अगर टीवी पे देख रहे होते थे तो बीच में एड्स भी आते थे और हम वेट कर रहे होते थे एड्स, या कोई क्रिकेट मैच आप देख रहे होते थे और आप उसे फास्ट फॉरवर्ड नहीं करते थे। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से यूट्यूब पे आप फास्ट फॉरवर्ड का आपके पास ऑप्शन आ गया है, ठीक है। आप इवन के
अगर आपने नेटफ्लिक्स या उस पर अगर स्पोर्ट्स के कोई भी मैच वगैरह है और अगर आप नया टेल उस पर देख रहे हैं तो उस पर आजकल ऑप्शन आया हुआ है कि आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, इवन के उसे रिवाइंड भी कर सकते हैं, उसे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो ये इसी वजह से जो ट्विटर ने अपना टाइम दिया हुआ है वो 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड का है, क्योंकि उन्होंने ऑडियंस की ऑनलाइन ऑडियंस की साइकी को कंसिडर करते हुए टाइम स्पैन बहुत कम कर दिया, और इसका हमारे पर भी बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि इससे हमारा कंसंट्रेशन लेवल कम हो रहा है, हम ज़्यादातर फोकस नहीं कर सकते, हम एम नहीं कर सकते, हम और बहुत फास्ट हो गई चीज़ें, जिसकी वजह से इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा। ठीक है, Thank you so much, Zaman.